This is called experimental research. We are starting today. Yesterday we have tried to understand the correlational research. Now today we are trying to do experimental research. What is experimental research? This is a quantitative type of a research. And now what happens in experimental type of a research? This is an We are starting from just like from experiments. Why? Because in experimental research we are discussing the concept of an experiment. So an experiment is a type of research method in which you manipulate one or more independent variables and measure their effect on one or more dependent variables. This is a type of relational type research where the relationship is is measured, but this is not just like a correlational type of a research where what happened we yesterday discussed that in correlational type of a research that is also called associational research, where the relationship between two variables or more than two variables is studied. But in experimental research, again, the relationship between two or more variables is studied or measured. But in experimental type of a research, one variable is manipulated. One variable which is manipulated is independent variable, and then after manipulating that independent variable, our purpose is to measure the effect of that manipulation of independent variable on one or more dependent variables. And in experimental design is used for what? This experimental design means creating a set of procedures to test a hypothesis. Within experimental research or in any type of a research, we as a student of research methodology, we are very much clear that we make hypotheses and then go for the test of that hypothesis or for the confirmation, acceptance or rejection of that hypothesis. Within experimental design, within experimental research, we again what we do create a set of procedures to test a hypothesis. Means here in experimental researches, experiments researchers are of great importance. Why? Because they create set of procedures to test the hypothesis. Now if we define that what is an experiment right here, if we want to define that what is an experiment which takes place in experimental researches, then we can define that this is a research method in which conditions are controlled. For example, just like we have been performing different type of experiments in laboratories when we were students of first year and second year in grade 9 and 10 and after that. So what we do in those experiments, we control the conditions. It means that this is an experimental type of a research where experiments are the situations are created, and this is a method in which conditions are controlled for the purpose. So that means what is the purpose of controlling those conditions? Look here, so that one or more independent variables can be manipulated to test a hypothesis about a dependent variable. We make hypotheses in experimental researches like other type of quantitative researches. Then in experimental researches, we manipulate independent variable. Means researcher will manipulate, will bring some change in an independent variable to test a hypothesis about dependent variables. Because here in experimental researches we make hypotheses within which one variable is independent and the other one is dependent. So what we do, we control the conditions by manipulating independent variables to see that how it is affecting on dependent variable. And what occurs as a result, that this research will allow for what? Evaluation of cause and effect relationship among variables for the purpose of
evaluation of cause and effect relationship, while all other variables are eliminated or controlled. It means that's why the control is important characteristic of experimental research. Why? Because we want to study only the relationship of two variables or more than two variables. They can be two independent variables or two dependent variable, but those variables which researcher wants to measure or researcher wants to find the relationship between those variables would be defined by researcher, and all other variables which will obviously exist in that situation, those would be controlled by the researcher. This control is main important characteristic or identification of a research which is called experimental research. Now some of the definitions are very much important to further proceeding or further understanding of experimental research. Now what these definitions are: first of all, when we are saying that in experimental research, that in variables are called independent variables and dependent variables. Independent variables and dependent variables. So we should have to be clear about the definitions of these different type of variables. We are starting from understanding independent variables. Now look here, the independent variables is any variable in an experimental research then can be manipulated or altered. It means that can be altered, they can be changed independently of any other variable. And dependent variable that is expected to be dependent on the manipulation of independent variable. जब हम independent कह रहे होते हैं, variable एक ऐसी समझिए कि कोई चीज होती है जिसका वैल्यू चेंज होता रहे. वेरिएबल माना जिसमें ये क्वालिटी हो कि वो अपना वैल्यू जो है वो वेरी कर सके, वो चेंज कर सके. जैसे एज है वो एक वेरिएबल है, जैसे हेल्थ है वो एक वेरिएबल है, जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो एक वेरिएबल है. अब इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, यानी एक इस तरह की स्टेट्स जो कि अपने अंदर ये क्वालिटी रखती हो कि वो चेंज होती रहे. सही है. तो अब जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कह रहे होते हैं तो मतलब ये एक ऐसी वेरिएबल है जो कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, जिसका वैल्यू किसी की वजह से चेंज नहीं हो, या एक ऐसी स्टेट जो कि किसी के वजह से चेंज नहीं हो, उसमें कोई उसका वैल्यू नहीं हो. डिपेंडेंट कहा ही उसे वेरिएबल को जाता है जो कि किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हो. अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ही यही होता है कि आप जब इंडिपेंडेंट जिस वेरिएबल को कह रहे हो, आप ये देख रहे हो कि उसकी कितनी परसेंट, उसका कितना वैल्यू, उसका कितना अमाउंट, किस तरह से चेंज ला रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, और कितना और कैसे ला रहा है. तो आप एक चेंजिंग लाते रहते हो, अल्टर करते रहते हो, मैनिपुलेट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टू सी द डिफरेंसेस और द इन्फ्लुएंसेस ऑन dependent variable. Okay, some other definitions which are also very important to understand experimental research. This is what is called groups. When we conduct experimental researches, the researcher make two different type of the groups. One of them is called experimental group and the other group is called control group. These are again the characteristics of experimental research. What are the characteristics of experimental research? That variables should be there. The manipulation of independent variable is very much necessary. Then what is more necessary? That we have two different groups within an experimental design, within an experimental research. These are called experimental group and control group. Now what is the difference between these groups, experimental group and control group? What is the difference between them?
What is the difference between experimental and control group? The group of subjects, experimental group is the group of subjects which is exposed to the experimental treatment. Experimental treatment means independent variable. So the subjects which are being exposed to the experimental treatments, just a minute please. Okay, so the experimental group and control group. Now, what happens in experimental group? Experimental group is in fact the group of the subjects. It is again comprises of the sample which we take from as a population of our interest, and these subjects or this sample or the group of the people or the group of the participants, this group of participants which is called experimental, this would be exposed to the independent variable, means it would be exposed to independent variables. We will introduce independent variable to these subjects, and control group is a group of subjects which would not be exposed to the independent variable. It means, now look here, the definition I have written over here, the group of subjects which is called control group would be exposed to the control condition, and it would not be exposed to the experimental treatment. We are making two groups within our experiment to know that whether the independent variable is of any influence on the dependent variable or not. So we are making two groups to measure the difference and to measure the influence of independent variable. हम दो ग्रुप बनाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है, रिसर्च में। एक को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को कहा जाएगा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम जितने भी सब्जेक्ट्स को दाखिल करेंगे, जो भी सैंपल हमारे पास होगा, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। और क्या करवाते हैं, उनको हम प्लेसबो ट्रीटमेंट के ऊपर रख रहे होते हैं, यानी जिसका कोई भी डायरेक्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होती, जो कि हमने बाकी रिसर्चर बाकी सब जो सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस हमने करवाई हुई होती है। अब हम अगर फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करते रहें आगे, तो आप ये देखिएगा कि फर्दर व्हाट इज द अदर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दिस इज randomization. I have explained the character of randomization in the random selection of the subject and random assignment then of the subject. This is random assignment. The random selection is the procedure which occurs or happens in sampling, but the randomization is the assignment of the subjects to two groups. जब हम दो ग्रुप बनाए हैं अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह रहे हैं। अब इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी सब्जेक्ट्स होंगे और कंट्रोल ग्रुप में भी सब्जेक्ट होंगे। तो हम ये चीज हमें समझनी चाहिए कि क्या वो हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो सैंपल हम ले रहे होते हैं, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को रिसर्चर अपनी मर्जी से दोनों ग्रुप में डाल देगा कि ये तुम आप लोग कंट्रोल ग्रुप में हैं और ये लोग जो हैं ये जो सब्जेक्ट हैं ये उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे रेंडमाइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है। अब ये रेंडमाइजेशन क्या है? असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट टू ग्रुप is based on chance. Now, what is chance? That is random. The random means by chance. Why? For the purpose of providing control by chance.
हम क्या कह रहे होते हैं, रेंडमाइजेशन असाइनमेंट हमें अलाउ करती है द अजम्पशन दैट द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। हम जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है, हम उनको दो ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे तो रेंडम सिलेक्शन के थ्रू, यानी रेंडमाइजेशन का प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू बाय चांस जो है हम चांस देते हैं, जिस तरह से रेंडम सिलेक्शन में हम चांस देते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि वो सैंपल में जो है शामिल हो सके, उसी तरह से रेंडमाइजेशन यानी रेंडम सिलेक्शन यहाँ पे किस लिए होती है कि जो सैंपल हमने लिया हुआ है पॉपुलेशन से वो चांस से जो है दोनों ग्रुप्स में शामिल हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी मर्जी से एक ग्रुप में रिसर्चर कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ पार्टिसिपेंट्स को रख रहा है और दूसरों को रख रहा है। इससे ये होगा कि हो सकता है कि वो सारे जो चांस के बगैर जो डिवीजन होती है, बगैर चांस दिए हुए सब्जेक्ट की, वो हो सकता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो मतलब एक जैसे नहीं हो पाए। हो सकता है कि उसमें जो है जो ग्रुप्स हैं that the groups, यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि allows the assumption that the groups are identical, यानी वो आइडेंटिकल तो होना एटलीस्ट एक दूसरे से। अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो फिर जो आपकी रिजल्ट आएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, उसमें फिर जो वैलिडिटी होती है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, वो इतनी बेहतर वैलिडिटी नहीं होगी। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन करते हैं। random assignment allows the assumption that the groups are identical, that they are consistent of the like identical participants with respect to all variables except the treatment, experimental treatment। सिर्फ independent variable जो है उसके ऊपर या experimental treatment के हवाले से difference होगा, बाकी groups जो है वो same होंगे। Now we are coming to the whole system। This is very important slide, and please try to understand this slide by giving your full concentration. Now the good experimental research design or the research requires a strong understanding of the system you are studying, like what you are doing in your research or what you want to do as an experimental research. You should have to be very clear about 2 to 3 and 4 steps. What is the first step we as a researcher are necessary to take? That first step is first considering the variables. First of all, you will consider your variables and then how they are related. It means that the variables, how the variables are, what are your variables and how they are related. This is your first step. The second step, what would be the second step? Make productions that are testable, यानी आप कुछ productions बनाएंगे जो specific होंगे, जो testable होंगे about the relationship of your variable. Third है to clearly define your independent variables, because जब आप independent variables जो है वो किस तरह से vary होगा वो आप define कर लेते हैं तो उससे external validity of your results increase हो जाती है। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल्स को आपने कंसीडर करना है, बताना है। सेकंड क्या है, टेस्टेबल और स्पेसिफिक प्रोडक्शंस बनानी है, हाइपोथेसिस बनाने हैं। थर्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने बिल्कुल क्लियरली, वाइडली, फाइनली एक्सप्लेन कर देनी है क्योंकि इससे एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट बढ़ती है। फोर्थ क्या है कि आप किस तरह के प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, क्या रेंडमाइजेशन है, क्या एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल है, क्या आप डिजाइन कौन सी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताती चलूं कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी डिफरेंट डिजाइन्स यूज होते हैं। वो डिपेंड करती हैं कि आप कंट्रोल किस तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। इससे क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी बढ़ रही होती है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, कि आपके कंट्रोल्स जो हैं क्या हैं, आपने रेंडमाइजेशन की हुई है, आप डिजाइन कौन सी यूज कर रहे हैं, सो दैट internal validity of your experimental research increases. Now we are coming to the procedure of the experimental research. Procedure of experimental research is similar like the procedure research process. Sorry, this is the process, and the process of experimental research is similar. Like what, how is this similar?
First of all, the research questions are defined, variables are defined, then second hypotheses are made, and then the experimental treatments on. This is the third step, which will occur in experimental researches, and what this would be, define your experimental treatments, like what type of the treatments you will introduce in your research, and then assign your subjects to the treatment groups, like control group or experimental group or treatment group. This is how you have to be clear about the process of research within experimental designs, experimental research, starting from your research question, understanding of your variables, and a description of your variables, description of hypotheses, description of experimental treatments, and assign your subjects and assignment of those subjects to different groups. Okay, the first question arises. For example, if we take an example for this research question, if we are starting with the question, because what was the procedure? What was the procedure? Define your research question in variables. So this is the question, for example, which I have taken, or which we as a researcher or the students of research methodology, we have posed this research question, and our research question related with phone use and sleep. That we just are thinking about the use of phone and the sleep patterns. Now the researcher wants to know how phone use before bedtime affects sleep patterns. The use of phone before sleeping, how it will affect on the sleep patterns. Specifically, you ask how the number of minutes. Now this is the specification of the variable, this is the clarification of your variables. First of all, the research question was what? Phone use and sleep. Then researchers interest was what? To know that how the use of phone before bedtime affects on the sleep patterns of individual. Now specifically what you will do, specifically you will introduce the variable, like how the number of minutes a person uses their phone. Now this is independent variable, that the minutes of or the time which person take for use of phone before sleep affects the number of hours they sleep. This is called the number of hours they sleep. Number of hours they sleep, it means this is independent, a dependent variable. We are interested to know that how they are related, or what is their cause and effect relationship between these two variables. What we will do after introducing research question and specifying our variables of the research. Now we will make hypothesis of our research. Now this question would be put in hypothesis. We will translate our research question into an experimental hypothesis. You need to define the main variables and make predictions about how they are related. Okay, so what we will do, so, sorry for the interruption, to translate what we do, we translate our research question into an experimental hypothesis, and here we need to define the main variables again in the predictions we make about the relationship between those variables. This is very simple. If we just take, we what we have to do, we have to start from a research question. We have to specify our variables,
and clearly specify our variables in experimental research and any type of a research. Then we have to change those research questions into research hypotheses or an experimental hypothesis, like where experimental hypothesis means the hypothesis which can be used in experimental researches, जिनके ऊपर हम experiments कर सकते हैं. उसके बाद में क्या होगा, जब आपने ये hypothesis बना लिया तो now this slide is making a clear introduction of independent relationship about the question which I have put here to give an explanation of experimental research. Now, what was our research question? Our research question was phone use and sleep. Phone use and sleep before sleep. Okay, phone use before sleep and minutes of phone use. Now, what is this? This is independent variable. Minutes of phone use is our independent variable and hours of sleep per night is dependent variable. हम ये एक रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि सोने से पहले जितने आप जो फोन यूज करते हो वो कितने टाइम के लिए यूज करते हो, कितने यूज करते हो, क्या यूज करते हो, फॉर एग्जांपल उसकी टाइमिंग्स क्या है, और फिर उसका आपके स्लीप पैटर्न्स के ऊपर, यानी जो यूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स अपने लिए हुए हैं उनमें हम ये चेक करना चाह रहे हैं जो यूज कर रहे हैं, फिर उनके स्लीप के पैटर्न के ऊपर क्या इसका इफेक्ट हो रहा होता है. ठीक है, तो हम अब ये बना दिया है. उसमें क्या होगा कि एक चीज हम जरूर कंसीडर करेंगे कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो है, यानी के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमारे पास क्लियर है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसका पर्पज ही यही होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उन्हीं को कंसिडर किया जाए, बिकॉज आप उन्हीं में जो है वो काज एंड इफेक्ट का, काजल रिलेशनशिप, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं. तो जो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स, जो के भी उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जितना के वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर सकता है, जो हमने लिया हुआ है मेजर बना के अपनी रिसर्च में, वो करता है. उन वेरिएबल्स को कहा जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. कौन से होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स नेचुरल, लाइक हमारा जो क्वेश्चन हमने पुट किया है स्लीप पैटर्न्स का, उसमें जो नेचुरल पैटर्न्स होंगे स्लीप के, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा. यानी आप ये देखना चाह रहे हो ना कि एक पर्सन जो है बिफोर स्लीप अगर कोई कितना टाइम के लिए यूज कर रहा होता है फोन, और फिर उसका जो है स्लीप पैटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो उसके लिए आपके जो दूसरे वे नेचुरल लाइक वेरिएबल्स या वेरिएंट्स हो सकते हैं, जो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको देखना पड़ेगा. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं दैट कुड, जो के यू डिड नॉट अकाउंट फॉर, जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं है एज अ रिसर्चर, लेकिन अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो आपके पूरी रिजल्ट्स को रूइन कर देंगे, सब बिल्कुल उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी खत्म कर देंगे, उसकी रिजल्ट्स जो है वो नहीं होंगी ट्रू. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि बेटा हमारी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं वो खत्म हो रही हैं, तो जैसे ही खत्म हुई है आप जाइएगा नहीं कहीं पे, मैं दूसरा लिंक शेयर करवा के और फिर दोबारा से इसको जो है कंटिन्यू करूंगी. ठीक है. देन आफ्टर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस करवाना है. जस्ट फॉर अ मिनट प्लीज.
Okay. So we have reached here on the third step of hypothesis. What would be the hypothesis of our research question? Our research question was about phone use and sleep. And now, what the hypothesis we have to make? Two hypotheses only. One would be null hypothesis, and other is alternative hypothesis. Null hypothesis I have explained to you in the chapter of hypothesis. That what is null hypothesis? Null hypothesis states no relationship between variables. Now, what would be the null hypothesis for this research question about phone use and sleep patterns? Now look, phone use before sleep does not correlate with the amount of sleep a person gets. It means that there is no relationship between the use of phone before sleep and the amount of sleep a person gets. Alternative hypothesis, what could be alternative hypothesis? An alternative explanation is called alternative hypothesis. Now, alternative hypothesis would say increasing phone use before sleep leads to a decrease in sleep. There would be a relationship. What? There would be a relationship between two things. One is the use of phone and the other is sleep pattern. It means that alternative hypothesis is stating an alternative explanation to the null hypothesis. Now, controlled experiment is the third step of experimental research. What this step would be? Next, what you have to do after hypothesis, you have to choose a design, a control experiment. The next step would be in an experimental research after making hypothesis is to design a control experiment and then systematically and precisely manipulation of independent variable or variables. That's why I put s individually to show you that there can be one independent variable, there can be more than one independent variable. Next step is precisely where the dependent variable and control any potential confounding extraneous variables. In now, if you have any question about experimental research, you are allowed to ask questions. आप मुझे अब आप अनम्यूट कर सकते हो और जितने भी आप जो हैं वो आप क्वेश्चंस हो हैं आपके पास तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं experimental research से related about today's lecture. If you want to ask any question, so please you can ask questions. यस मैम मैम एक क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ थोड़ा सा आप अगर बेटा थोड़ा आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी अस्सलाम वालेकुम मैम मैं मरियम हियर मरियम यस मैम मैम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल सफा ने कहा है मैडम वापस रिपीट कर दीजिए मैं वापस बिल्कुल कर देती हूँ वापस कंफाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल्स को कहा जाता है जो कि भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं लेकिन हम उनको क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है हम उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं उस वक्त इंटरेस्ट नहीं होती हमें उसमें उस वक्त उस रिसर्च में तो हम उसको कंट्रोल में रखेंगे हम ये देखेंगे कि हम सिर्फ वही वेरिएबल्स ले रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिसको के हम स्टडी कर रहे हैं जिसके ऊपर के हमने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं और जो बाकी उस तरह की इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगी दूसरी जो कि भी इन्फ्लुएंस करती होंगी तो फिर हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे अपनी रिसर्च में उसको कहा जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स एक्सट्रानियस वेरिएबल्स जिनको कंट्रोल करते हैं हम वेरिएबल्स को वो वेरिएबल्स ठीक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट होती है क्योंकि हम इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देख रहे होते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कितनी कैसे कब कहाँ किस तरह से वो जो है
रिसर्चर उसमें इंटरवेंशन लाएगा, उसको मैनिपुलेट करेगा और फिर ये देखेगा कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? मैम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और वो जो कंट्रोल ग्रुप का आपने बताया था वो थोड़ा सा बता दें। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ये दो ग्रुप्स हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बनाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उनको उस तरह के ग्रुप्स को कहा जाएगा जो कि मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, इससे आगे इससे पहले वाली जो पहले चीजें आती हैं वो बता दूं। देखिए, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं ना, उसके लिए हमें सैंपल चाहिए होता है। हम पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं, सैंपल सिलेक्शन के प्रोसीजर के थ्रू, जिसको सैंपलिंग कहा जाएगा। अब वो हमारी मर्जी होती है कि हम रैंडम असाइनमेंट कर रहे हैं या हम के नॉन रैंडम मेथड्स यूज करते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं ना, टाइम मेरे पास थोड़ा है तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से आपको बता दूं। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो वहां पे हम ग्रुप्स जो लेते हैं ना, वो रैंडम सिलेक्शन के थ्रू लेते हैं। यानी हम रैंडमली जो है हमने एक दफा रैंडम सिलेक्शन की, हमने हमारे पास सैंपल आ गया। अब उसी सैंपल में से हमने एक को कंट्रोल ग्रुप में रखना है, एक को एक्सपेरिमेंटल में, तो वो रेंडमाइजेशन के थ्रू होगा, यानी रैंडम असाइनमेंट के थ्रू। अब आपने पहले रैंडमली सिलेक्ट किया, अब आप रैंडमली ग्रुप्स जो आपने बनाए ना, उस ग्रुप में वो असाइन होंगे, यानी बाय चांस आप उनको उसमें इंक्लूड करेंगे, अपने विल के साथ में नहीं करते हो। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो है वो इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सब्जेक्ट्स आ गए ना, उन्हीं के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उन्हीं को वो चीज जो है वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप है उनको नहीं करवाया जाता है। देखना यही होता है कि वो किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम दे रहे हैं, जिनको दे रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट कर रहा है, और जिनको नहीं दे रहे हैं उनमें कोई चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कोई और क्वेश्चन है? अच्छा, ठीक है, फिर क्यों ये खत्म हो रहा है बिल्कुल मिनट्स, तो अब मैं जो है वो आपकी आज की मीटिंग जो है वो ये खत्म कर रही हूँ और एंड कर रहे हैं हम मीटिंग। और अगर इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे, जैसे हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे या